हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रू हब। मेरा नाम है निशा और मैं हूँ आपकी कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ ट्रेनर एज वेल एज योर करियर गाइड। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है सारे ग्राउंड स्टाफ एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द अकासा एयरवेज ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू राउंड्स, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड मैं कुछ आप लोगों को टिप्स भी दूंगी ताकि आपका इंटरव्यू क्रैक होने में हेल्प हो सके। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो ये हम यहाँ पे मोस्टली सारे ही एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू द एविएशन पोस्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो हेड एंड सब्सक्राइब योरसेल्फ टुडे इटसेल्फ एंड पहले वाले भी वीडियोस देख लीजिएगा जो आपको काफी हेल्प करेगा एविएशन इंडस्ट्री में कोई भी जॉब पाने के लिए। सो बिना समय गवाए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट लेकिन आकाश एयरवेज में इंटरव्यू के लिए आपको हमेशा ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। बट उसके पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि किसी भी एयरलाइन में अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है तो आपके पास रेज्यूमे जो है वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। एंड सारी डिटेल्स जो कैसे एटीएस बनाते हैं, कवर लेटर कैसे बनाते हैं, आप अपना इंटरव्यूज कैसे लाइन कर सकते हो, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वन ऑन वन कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी आपका रेज्यूमे एज पर दी एटीएस स्टैंडर्ड्स एंड एज पर दी एयरलाइन में बना सकूं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना होगा। So now once you log in, register yourself, then go to this particular page. Here you can see I've already applied for it. But yes, I would like to tell you how you need to do it as per the company policies. So basically what you need to do is upload. You need to create your profile right here. Okay, so here you get an option of uploading documents. Now, once you do it, then you will have to fill out all the details. Now, let me just do it again for you all. So, this is how the documents, this is how the page is going to look like. You just need to upload the document and automatically it fills up all the details. Okay, but yeah, there are few necessary details that you need to mention. And yeah, so, a few necessary details, like I said, is related to your skills section and your experience sections, if you have experience, and your qualification sections. After each and every section you cross, make sure that you are clicking on update button. Yes, so they are asking me for the passport number, and it's not necessary for me to type the passport number. Whatever are starred, I just need to mention those things. Okay, now once I do that, I'll go to this particular section, and then I'll just mention all the important details like address. Just be a little quick. So if you are residing somewhere on rented place, you can mention about it, and in the permanent address, you can mention about your permanent place. But if you're staying in a same place, you all need to do is just click on the permanent and it will accept it. There you go. You don't need to mention anything. Update. Very important. Okay. Now, if someone who is fresher will mention fresher, people who have experience, you need to mention your total experience here. But the good part about this is all ATS software. So the moment you upload your resume, automatically it counts your experience and it mention all the details here. So you don't have to mention anything. But as a fresher also, you can apply. There you go. If you have done internship, make sure that you're mentioning about the internship right here. Now, once that is done, you come to the education part. It's not necessary for you to fill out all the details, but yeah, basic details are important. So, I'll just mention about
Trust. Update. Now it's successfully updated. So whatever skills I had mentioned on my resume, you can see it has already tracked and it has mentioned over here. But if you want to add more details, such as let's say communication, okay, so here I can easily mention communication. You cannot type and just move further. You have to select particular words from the drop box. We'll again mention professionalism, professional communication. Yes. Then we can also mention time management and update. Here you can see three languages that I'm fully aware about. I'll just update. Ensure that you are updating each and every details. Here it should be at least 100. Okay, so it's not 100 for me because I have not specifically in detail mentioned about my qualification. Let's say if I do this, whenever I mention about this, it literally makes me feel I'm so old. Now, once you fill up all of the details, then all you need to do is go back, done, and then from here, you can just click on all jobs. Let me show you how other questions are going to be for you, as I've already applied for this particular position. So you will not be able to see the questions, but it's going to be the same questions for everyone. So I'm going to apply for the freshers and experienced uh, ground staff roles for the customer service. Here I will mention about my age, gender, qualification, PAN card details. Scroll down. Do you have Aadhaar card? Yes. Passport? Yes. Do you have any visible marks? No. Do you have a color vision deficiency? No. Relocation? Yes. I can relocate. Are you ready to work in shift? Yes. How many years of experience you have in aviation? I have almost more than 5 to 7 years of experience. So this is how I'm going to submit my application. So this is very simple, easy peasy, lemon squeezy type of thing. You can easily do it and you can also apply for the cabin crew position. There will be no changes. It's going to be the same questions coming up again and again. I'll just show you. See, similar questions almost, but it has more questions. But for the cabin crew role, yeah, you can also apply. They are also hiding for the Goa location, but to be honest, guys, they have already sent out the invites to most of the people. The interviews are held on 15th of Jan in Goa. So whoever has applied and got an invitation, best of luck. And people who love this video, and if you found this video very helpful, and I hope this video help you to uh, apply for the various vacancies out there in future. Make sure you hit the subscribe button and don't forget to share this to your friends. So after you submit your online application, please wait for some time, have some patience.
because they will send you invite for your offline interviews. It is not necessary that Akasa Airways always conduct invite-based interview for the ground staff, but if you keep a regular update on their website, you will understand that they also conduct walk-in drives in three metropolitan cities, which are Delhi, Bengaluru, and Mumbai, as they have their head offices in these three metro cities. So regularly keep yourself updated with the walk-in interviews whenever it is happening. Then you please give it a try, go directly, apply, and then crack your interviews. Now, let me tell you what happens when you go for the offline interview. So, round number one is going to be your registration round, which means in the registration, they are going to check your important documents. And as a ground staff, this is very important for you to have few important documents. Number one, updated resume. Number two, whatever qualifications you have got so far, you need to carry your original qualification documents. Number three, additional certificates. If you have mentioned in your achievements that you have got prizes or certificates, or if you have taken additional courses, then you need to carry those documents along with you. Then, one more important thing for everyone is the passport. Without passport, you cannot give the interviews. I have told this people multiple times. Airlines do not entertain people who do not have passport. So even if you have applied for the passport, you have the receipt, it doesn't matter to them. It's not going to work out for you. Trust me on that. You need to have a passport in hand when you go for the airline. जो रिसीट वाली चीजें हैं वो थर्ड पार्टी कंपनीज के लिए आप यूज कर सकते हो, बट फॉर एयरलाइंस दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट. Number fifth, other important documents like your Aadhaar card and PAN card. So ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यूज या कोई भी इंटरव्यूज के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप उसे अपने साथ हमेशा कैरी करिए. देन अगर आपने वेबसाइट पे देखा होगा तो उन्होंने हाइट क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, क्योंकि आपको हाइट मैच करना है. एज अ सिक्योरिटी यू हैव टू चेक द एयरक्राफ्ट थरोली. सो कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ सामान ओवरहेड बिन में रखे होते हैं एंड काफी हाइट पे होता है. सो आपको सिक्योरिटी चेक क्विकली करना होता है, तो आप किसी चीज का सपोर्ट ना लेते हुए डायरेक्टली वो सारी चीजें चेक कर सको, इसीलिए आपको हाइट क्राइटेरिया पूछा गया है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपका हाइट चेक होगा. आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन योर हाइट चेक विल बी डन. once you clear that round, then there will be a communication round. Communication में they are going to ask you about the ground staff roles and responsibilities and questions related to your resume. आकाश एयरवेज हमेशा रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. अगर आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में हो सकता है वो क्वेश्चन, या अगर आप पहले कहीं काम करते थे तो आप क्यों स्विच करना चाहते हो वो पूछा जाएगा आपसे. देन आता है आपका फाइनल इंटरव्यू. फाइनल इंटरव्यू इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड फॉर एवरीवन. बट टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी होगा. अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो. या तो अगर आपको चाहिए कि आपको कोई हेल्प करे तो क्रू हब इज द राइट प्लेस फॉर यू, जहाँ पे हम 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड करते हैं. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करता है यहाँ पे. सो अगर आप हमें ज्वाइन करते हो तो हम आपको काफी हेल्प करेंगे टू क्रैक ऑल योर ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यूज. एंड कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग इटसेल्फ हम यहीं पर ट्रेनिंग सेंटर में ही आपके इंटरव्यूज अलाइन होंगे, जहाँ पे काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इंटरव्यूज क्रैक कर लिया है और आप भी क्रैक करोगे. नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल इंटरव्यूज में आपसे काफी सारा ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो होगा कि व्हाट डू यू वांट टू बी एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, व्हाट इज द रोल ऑफ अ ग्राउंड स्टाफ, are you willing to relocate to a different state, how are you going to manage everything. Those questions will come up, and few questions related to your qualification, achievements, additional certificates. So आप resume जो है वो thoroughly prepare करके जाना, क्योंकि resume sorry, Akasa Airways is famous to for resume based questions. वो आपसे कुछ भी random question पूछेंगे. जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा, जो इंटरव्यू में टेक्निकली आप देखते हो इंस्टाग्राम पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको वही क्वेश्चंस पूछेंगे. ज्यादातर आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके रेज्यूमे से. सो आप अपने रेज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर करो. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे फॉर कैबिन क्रू अकासा एयरवेज के जो इंटरव्यूज के मैंने बारे में बताया है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरीके से आप लोगों को ग्रिल करेंगे इन योर फाइनल राउंड. बट अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अच्छे से टैकल कर पा रहे हो, तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक करोगे.
Communication plays a key role here. आपके आंसर जरूरी नहीं है कि बड़े होने चाहिए. If your answers are short, precise, to the point, that is going to nail everything. So ensure that you're preparing really well for yourself. If you wish to enroll yourself, then quickly give us a call because seats are filling up really fast. Don't delay. So if you found this video helpful, make sure you hit the like button, subscribe to our channel, comment below whatever queries you have, and I'll be happy to help you all. Till then, bye bye. Best of luck for your upcoming interviews.